Hello everyone, welcome to Smart Java. Today we will discuss JPA relation mapping in Spring Boot. So हम आज बात करने वाले वन टू वन मैपिंग रिलेशनशिप और वन टू मेनी मैपिंग रिलेशनशिप. ओके, मीन्स हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन Spring Boot. ओके, विदाउट मैपिंग रिलेशनशिप वी कैन नॉट क्रिएट अवर Spring Boot प्रोजेक्ट. फर्स्ट पॉइंट, वन टू वन होता क्या है, मीन्स कैसे एग्जीक्यूट करते, मीन्स कैसे टेबल को मैपिंग को रिलेशनशिप करते. ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं one table like user and then next table is a profile. Okay, so हमारा one user को required for one profile. आप another example ले सकते हैं like student is one table and laptop is another table. For example, एक स्टूडेंट को हमने वन लैपटॉप असाइन किया, सो वहाँ पे वन टू वन मैपिंग रिलेशन यूज होगा. ओके, तो वन टू मेनी मैपिंग रिलेशनशिप हम क्या कहाँ पे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वन ऑथर है. ओके, तो वन ऑथर ने मल्टीपल बुक्स राइट किए, सो यू कैन यूज हियर वन टू मेनी रिलेशनशिप. वन ऑथर राइट मल्टीपल मीन्स एन नंबर ऑफ बुक्स. ओके, तो इस तरह से हम मैपिंग रिलेशन डिफाइन करते. ओके, तो ये तो हो गई थ्योरी. सो प्रैक्टिकल में उसको हम कैसे यूज करते और पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट बॉडी में कैसे पास करते, तो उसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली. ओके, ये तो हो गई थ्योरी. और प्रैक्टिकल में कैसे एग्जीक्यूट करते वन टू मेनी मैपिंग रिलेशनशिप. ओके, go to Eclipse and then create project, click on file, then new, then select other and type here like Spring Starter. Okay, then select next, write here project name like relation mapping like this, then select type as a Maven, then select JDK version. तो यहाँ पे मैं 17 यूज करूँ तो select as a 17, then next, then select our dependency like JPA because हम JPA यूज करने वाले हैं. Then MySQL because मैं MySQL को कनेक्ट करने वाली हूँ. ओके, then next Spring Web, then next Spring Boot DevTools, then finish. इस तरह से हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. यू कैन सी हियर दिस इज अवर रिलेशन मैपिंग प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या क्रिएट करने वाले लाइक वन टू वन मैपिंग रिलेशनशिप. ओके, सो कैसे क्रिएट करते, फर्स्ट वी विल क्रिएट पैकेज. So click on this new, then select package like controller, then finish. Then next one is our service, new package dot service like this, then finish. Then second one is new package dot like our model, then finish. Then next one is new package dot repository like this, then finish. Okay, इस तरह से हमारे पैकेज क्रिएट हो गए. और वन मोर थिंग इज रिजल्ट रिस्पॉन्स, बिकॉज हम रिजल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाले. देन पैकेज डॉट रिजल्ट रिस्पॉन्स लाइक दिस, देन फिनिश. ओके, so go to in model package, so create here first is our user model. Okay, and then finish. And then second one is our profile, new class like profile. Okay, then finish. यू कैन सी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूजर इज माई वन टेबल एंड प्रोफाइल इज माई अनदर टेबल. तो यहाँ पे मैं वन टू वन मैपिंग रिलेशनशिप यूज करने वाली हूँ बिकॉज वन यूजर को वन प्रोफाइल रिक्वायर्ड. ओके, सो गो टू इन इक्लिप्स, go to user model, so write here like add table because this is our table. And then next is use here add entity because this is our entity class, so that's why use your annotation entity. So use here like our name, like our table name, use in double quote like user. Okay, the next step is use your id, added id because this is our primary key like private integer id like this. Okay, then next is private string username like this. Okay,
So next is use here like auto generate value like added generate value. Then next here हमें क्या करना है, आईडी को ऑटो जनरेट करना है. So use here added generate value and then import this one generation type like this. Okay. So next step is this is our one-to-one mapping relationship. That's why I use the added annotation one-to-one mapping relationship. Then use private and use a profile object like this and create object for profile and then use semicolon. Okay. Then create getter setter, then select source, generate getter setter, then select all, then generate like this. Okay. So go to in profile. Okay. So use here same as it is added entity like this. Then added a table. Then use name as a table in double quotes like profile like this. Okay. Then next step is use their added ID. Okay. As a primary key, private, integer, ID like this. Okay. Then generate, auto generate value like added generate value. Okay. And then import this one like this and just save this code. Okay. So like private string like first name. Okay. Then next is private string last name like this. Okay. And then use here added one-to-one mapping relationship. Okay. Then use here because हमारा यूजर का आईडी यहाँ पे फॉरेन यूज करने वाले. ओके. So use here added join column and then pass here name in double quote like user id like this. Okay. And then private call your user object, create user. Okay. Then save this code, create here getter setter, then select all, generate like this. Okay. So go to in controller, create here like new class like user controller, then finish. Then same as it is new class, create here like profile controller, then finish. Then next step is go to in repository, create here class like user repository like this and then finish. Then next is same as it is profile repository then finish. Then next is result response, new class, create here metadata response. Okay, like this and then finish. Then use here private string like message like fail or success, anything. Private integer like number of records means हमने how many records एग्जीक्यूट किए तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मेटाडेटा रिस्पॉन्स. देन प्राइवेट स्ट्रिंग रिजल्ट प्राइवेट स्ट्रिंग कोड. Okay. Then save this code and create getter setter source, generate getter setter, then select all, generate like this. Okay. Then next class is new class like result response like this
and then finish. Okay, private, call here metadata object, create object like this, then private object मीन्स हमने जो ऑब्जेक्ट को सेव किया इन डेटाबेस, तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इन रिजल्ट में. ओके, सेव दिस कोड एंड जनरेट getter setter, select all, generate like this. Okay, so next step is create service. Click here new class like user service like this, then finish, then same as it is new class for profile service. Okay, then finish. Go to in repository. This is our interface, so create your interface and then use your annotation like @repository. Okay, and then extend JPA repository like this, and then call here our profile model because this is profile repository. Okay, and pass here like integer because हमारा id as a integer, that's why I use here integer, and save this code. Go to repository, same as it is, use here @repository. Okay, create here interface. This is our interface class and extend with JPA repository. Okay, and then use here user model, and then next is use here integer because our id is integer, so I use here integer. Okay, go to in service class. First use here @service annotation because this is our business module. तो यहाँ पे हमारे बिजनेस जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम यहाँ पे राइट करते. तो दिस इज अवर सर्विस क्लास. ओके, गो टू इन कंट्रोलर. So use here REST controller annotation because this is our RESTful API. And then next is request mapping annotation because हमारे API के starting point जो रहते हम उसको यहाँ पे राइट करते like profile. Okay, and save this code, copy this code, go to user controller and paste. Okay, and use here like user. Okay, so call here like @AutoWire. यूजिंग ऑटोवायर हम क्या करते, तो सर्विस में हमने जो मेथड राइट की उसको हम एक्सेस कर सकते. ओके, प्राइवेट कॉल हियर अवर यूजर सर्विस एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजर सर्विस लाइक. ओके, सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे एपीआई राइट करेंगे लाइक क्रिएट. ओके, सो यूज हियर लाइक @पोस्ट मैपिंग. पोस्ट मैपिंग क्या करता है, डेटाबेस में डेटा सेव करता है, दैट्स व्हाई यूज हियर पोस्ट मैपिंग. Okay, and then use here public. ओके, एंड यूज हियर लाइक रिजल्ट रिस्पॉन्स. हम जो भी कोड राइट करने वाले हम उसको रिजल्ट रिस्पॉन्स में रिटर्न करने वाले, सो दैट्स व्हाई यूज हियर रिजल्ट रिस्पॉन्स. ओके, like this is our method like create. Okay, use curly braces, import this one post mapping. Okay, then use here return in service user service dot create method. Okay, so use here annotation like @request body क्योंकि हम रिक्वेस्ट बॉडी में पास करने वाले our user model like this. Okay, copy this user model and paste here and then use semicolon like this. Okay, so you can see here यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है create method in user service class. So click on this. Okay, so use here annotation like @AutoWire. Call here our user repository. Okay, हम जो भी JPA क्वेरी राइट करने वाले यूजर सर्विस में, दैट्स व्हाई आई यूज हियर यूजर रिपोजिटरी. तो हम उसको कॉल कर लेंगे, तो इसीलिए हम यूजर रिपोजिटरी को यूज कर रहे हैं आप. ओके,
So next step is use here like try catch block source. ओके, मीन्स हमारा जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको हम हैंडल कर लेंगे इन कैच ब्लॉक. ओके, so next step is create here like metadata object, metadata response like metadata, then use new keyword metadata like this, copy this metadata and paste here, then use semicolon. Next is result response like response, then use new keyword, copy this result response and paste here. Okay, then save this code. Okay, so हम यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक यूजर सेव लाइक दिस, कॉल हियर अवर यूजर रिपोजिटरी. ओके, एंड पास दिस ऑब्जेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट जो जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी में पास किया उसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे. ओके, डॉट सेव. ओके, ओके, सो लाइक metadata response dot set code like in double quote like 200 means okay. Okay, then next step is metadata response dot set message like record save successfully. In database like this. Okay, so next step is metadata response dot set number of records like user dot get id means हम जिसको हम सेव करने वाले लाइक हम अभी तो एक ही रिकॉर्ड को सेव करने वाले, सो पास ईयर लाइक 1. देन नेक्स्ट स्टेप इज रिस्पॉन्स dot set metadata response like this, and then next is response dot set result means object, this is our user save object and pass here like this, then return response, then use semicolon. Okay, so copy this code and paste here, then pass here like 400 like 401 anything. तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक फेल टू सेव record like this. Okay, so number of code is 0 and then result is null. Okay, and then save this code. तो इस तरह से हम सेव करते हैं. ओके, so next API like get by id, so use here like get mapping because हम get करने वाले डेटाबेस से like particular id, so use here like get by id. Okay, like this slash, then use curly braces and pass here id, and here also pass in double quote like save API like this, then use here like public result response, then get by id, then use here path variable, integer id, then use curly braces, copy this one and paste here, create here like get by id and pass here like id like this only. You can see that यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है create this method in user service, click on this. Okay, so copy this code and paste here. Okay,
तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है फॉर पर्टिकुलर आईडी जो हमने रिक्वेस्ट पास ईमेल में पास किया. ओके, so change here like find by id. This is our jpa query and pass here like id and then use semicolon like this. Change here as a user optional. Okay, create here user object like user data. Call here save user dot get like this and then use semicolon. Okay, so change here message as a get record from database for particular id. Okay, fail to fetch record. Okay, so copy this user data and pass here. Okay, so number of records कितने, हम एक ही record को return करने वाले, so that's why I pass here one record. Okay, so save this code. The next step is go to user controller. So next API is copy this code and paste here like @put mapping. This is our update API. So use here like update for particular ID. So that's why I pass here ID in path variable, then comma, use here request body and pass here our user model, user, copy this user, comma and pass here and then use here like update update. Okay, so you can see यहाँ पे हमें सजेशन मिल रहा है create this method in user service class. Click on this. Okay, so copy this code and paste here. Okay, so first हम क्या करेंगे, पहले तो हम फाइंड करेंगे फॉर पर्टिकुलर आईडी. तो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा इन यूजर डेटा. तो उसमें हम क्या करेंगे लाइक सेट कर लेंगे यूजर डेटा जिसको हमें अपडेट करना है लाइक सेट यूजर डेटा डॉट सेट. Copy this one and paste here like set like your username. Call here user dot get username. अगर हमें प्रोफाइल को भी सेट करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग रिलेशनशिप यूज किया. यू कैन सी हियर गो टू इन यूजर क्लास. तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमने प्रोफाइल को भी कॉल किया है. तो हम यूजर के थ्रू प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं. ओके, तो गो टू इन यूजर कंट्रोलर सॉरी यूजर सर्विस dot set profile. Call here like user dot get profile like this. Okay, and then next step is create user model like user update. Then call here our user repository dot save and pass here like your user data like this and then use semicolon. Okay, so change message record update like this. Fail to update record. Okay, so user update, copy this object and pass here save this code. ओके, तो इस तरह से हम यूजर कंट्रोलर के थ्रू प्रोफाइल को भी सेव कर सकते हैं और प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं. ओके, so next step is go to in profile controller. So call here like @AutoWire, create object like profile repository. Sorry, profile service, create object profile service. Okay,
Go to user controller, copy this code and paste this profile controller. Only change as the call here profile. Okay, and create profile object. Copy this code and paste here. Okay, copy profile service and paste here like this. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे, लाइक प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे, प्रोफाइल गेट बाय आईडी कर रहे और उसको अपडेट कर रहे. ओके, so next step is copy this profile and paste here. Create profile object, copy this one and paste here and paste here also. Okay, so go to in profile service, sorry, go to in profile controller. So you can see यहाँ पे हमें selection मिल रहा है, create this method. So click on this create. Okay, so create here like @AutoWire private profile repository, create object profile repository then use semicolon. Okay, बिकॉज हम हमारे सर्विस को रिपोजिटरी से कनेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई यूज हियर रिपोजिटरी. So use here try catch block like this. Okay, so next step is create here like metadata response. जैसा हमने यूजर सर्विस में कोड किया सेम एज इट इज हमें यहाँ पे करना है. ओके, so go to user service, copy this code, go to in profile service and paste here like this. Okay, so copy this object, जिसको हमने रिक्वेस्ट बॉडी में पास किया उसी ऑब्जेक्ट को हमें रिपोजिटरी में सेव करना है. तो कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हियर, कॉपी दिस रिपोजिटरी profile repository and paste here. Okay, create here an object like profile model, like profile, save, copy this object and paste here. Okay, so हमारा code is 200 because it's okay. Okay, so next is message is record save successfully in database. Then next is fail to save record. Okay, so go to in profile controller. So you can see यहाँ पे भी selection मिल रहा है, create this method in user service, save this code. Next is go to in controller, create this method in profile service class. So save this code, copy this code and paste here like this. Only difference is हमें यहाँ पे get find करना है for particular ID. So create here JPA query as the find by ID and pass here our ID जिसको हमने path वेरिएबल में पास किया है रिक्वेस्ट बॉडी. ओके, so create as a optional. Okay, so create here new object profile, update profile data like this. Then use here profile save dot get and then use semicolon. So copy this profile data and paste here as an object. So number of records is 1, code is 200. So change message get record from database for particular ID. Okay, fail to fetch record. Okay, so next step is copy this code and paste here. Okay, so only difference is यहाँ पे हमें अपडेट करना है. So call here like profile data dot set like our first name, profile dot get first name. Next is profile data dot set last name like profile dot get last name like this. Then next is profile data dot set user, call here profile dot get user. Okay, so you can see here
अगर आप प्रोफाइल के मॉडल में यू कैन सी यहाँ पे हमने यूजर एज द फॉलोइंग यूज किया इन प्रोफाइल, तो हम प्रोफाइल के थ्रू हमारे यूजर को भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, मीन्स हमारी आईडी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गलती से एबीसी के प्रोफाइल को डीसी के प्रोफाइल को ऐड किया, तो हम उसको चेंज कर सकते यूजिंग यूजर आईडी। ओके, सो कॉल योर प्रोफाइल रिपोजिटरी dot save profile data and pass here. Okay, and then next step is create here profile object like profile update like this, then copy this one and pass here in result response and change message record updated like this, fail to update record like this. ओके, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इन यूजिंग पोस्टमैन में पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट बॉडी में कैसे पास करते डेटा। ओके, so next step is how to connect database using Spring Boot. So go to in application.properties. So you can set here like Spring data source URL, Spring data source username and password like this. Okay, so copy this relation database, go to in MySQL. हम यहाँ पे MySQL database यूज कर रहे हैं। So create here database like create database, copy this relation and execute this query and replace this one. So you can see यहाँ पे हमारे रिलेशन करके डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली। ओके, देन एग्जीक्यूट दिस कोड, रन एज स्प्रिंग बूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 टेबल क्रिएट हो गए, लाइक वन इज प्रोफाइल एंड देन सेकेंड वन इज यूजर। गो टू इन MySQL, रिफ्रेश दिस वन, सो यू कैन सी प्रोफाइल वन एंड देन यूजर। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, नाउ इज एम्प्टी। तो हम पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं, मीन्स रिकॉर्ड सेव करके देखते हैं हमारे यूजर और प्रोफाइल में डेटा कैसे सेव करते हैं। गो टू इन पोस्टमैन, ओपन दिस वन, go to in user controller, copy this user and paste here and then slash save. Go to in body, then select raw, then JSON. Then write here, then use here like first is username, like ABC, then comma, then go to in user model. आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूजर नेम राइट किया, देन प्रोफाइल, कॉपी दिस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट and paste here same as it is, then use curly braces like this, then go to in profile model, so copy this first name and paste here like for example XYZ like this and then semicolon, then go to in profile, copy this last name and paste here like this and then use like AC like this. ओके, तो इसको हम हिट करके देखते हैं। तो सेंड दिस API, you can see here I got a output for record save successfully in database
गो टू इन माई स्क्वेयर, एग्जीक्यूट दिस प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते फर्स्ट नेम लास्ट नेम एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से सो एग्जीक्यूट दिस यूजर टेबल, so you can see here user और username add successfully। ओके, अगर हमें यहाँ पे तो you can see यहाँ पे हमें यूजर आईडी सेट करना है। तो कैसे सेट करें? इन पोस्टमैन, गो टू इन पोस्टमैन, so go to in profile controller, copy this profile and pass here like this। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी इज नल, तो इसको हम अपडेट करेंगे और इसको हम यूजर आईडी को सेट करेंगे। तो कैसे सेट करते? ओके, सो गो टू इन प्रोफाइल कंट्रोलर, कॉपी दिस प्रोफाइल and paste here, right here like update, copy this update and paste here slash id, then comma, then use double quote like user, then use semicolon, sorry colon, then use curly braces, then last one is curly braces, then use here like id, then use here like 1। okay, and then execute this code, sorry this is a get mapping, and send this api, sorry this is a put mapping, it's my fault, this send this api, so you can see a record update successfully। so go to in profile table and execute this api, so you can see a user set successfully। okay, अगर हमें गेट करके देखना है using user id, so copy this by id and paste here and change here as a user। okay, and use it as a get mapping and send this api। next step is अगर आपको only user सेव करना है database, so you can save also, so pass here like username in double quote like this, and then pass here like name as a Pooja, and then hit this api, so you can see here record save database is successfully, execute this api like this Pooja। अगर आपको प्रोफाइल सेव करना है डेटाबेस, यू कैन सेव आल्सो, so go to in profile controller, copy this profile and paste here and save, and then next is pass here like go to in profile model, copy this first name like Pooja, sorry like ABC, and then comma, then use here like last name Patil, then use go to in profile model, copy this user and paste here in double quote user, then use here comma, then pass here id जो अभी हमने क्रिएट किया like 3, like you पूजा नेम जो हमने क्रिएट किया id as a 3, this hit this api, record save successfully in database, go to your profile table, execute this one, so you can see here user 3 id is connected to the profile 2 id। okay, so इस तरह से हम record सेव कर सकते हैं in database in 2 ways। okay, so next topic is
वन टू मेनी मैपिंग रिलेशनशिप. ओके, वन टू मैपिंग रिलेशनशिप होता क्या है, मीन्स वन ऑथर है मल्टीपल बुक्स है, मीन्स वो एक ऑथर ने मल्टीपल बुक्स राइट की. ओके, सो गो टू इन इक्लिप्स. So create here another model like new class, create here like author like this, then say finish. Then next is new class like book like this, then finish. Go to an author, use here like added entity. This is our entity class. Next is table. Okay, so write here like name like this, then use here like author. Okay, so same as it is, copy this one, go to in book model and paste here and write here like book like this. Okay, so use here like added id annotation and import this one because this is our primary key. Then use here private integer id, then use semicolon. So हम id को इस auto generate कर रहे, so use here like added generate value annotation. Okay, so go to profile, copy this one, go to an author controller and paste here same as it is. Okay. Then next column is private string like author name. So write here name. And next is private. Use here as a list like book because one author have a multiple book. So I call here book object like this. Create here book object. Then import this one list as a java.util like this. And then next step is create here getter setter, select source, generate getter setter, select all and create this one. And next step is this is one to many mapping relationship. So use here one to many mapping relationship. And then next is map by our book, sorry, author, and save this code like this and copy this one, cascaded all. Go to an author class and then paste here same as it is, जैसे हमने user में किया same as it is. So go to in book, so copy this one, added id and auto generated and paste here. Next column is private like string book name. And next is use your annotation one to many. Private, call here author as object, create here foreign key author. And then next step is use here added join. This is our foreign key, that's why use here join column name author id. Copy this one and paste here as author id. The next step is create getter setter source, select generate getter setter, select all and generate and save this code. So same as it is, create first controller, new class author controller, then finish. And then next is new class like book controller, then finish. Then next is like new class book repository, then finish. Then use here address repository annotation, create here interface, extend with JPA query, sorry JPA repository, call here our book model
use here like integer, save this code. Next class is author repository. Right here author repository like this, and use your annotation like repository, then use your interface, extend with JPA repository, then call here our author model and use your integers like this, and then save this code. Then next is service, new class, create here like book service, finish, use your annotation like added service because this is our service class. Next is class author service, then finish. Then next is use your annotation like added service, then save this code. Go to in book controller, use your added REST controller. This is our RESTful API. Next is request mapping, and write here like slash book. Copy this code. Go to author controller and paste here. Type here like author like this. Okay. Go to book controller. Go to your author controller. Write here like added auto wire and call here our author service. Like this, create object author service and then use semicolon. Then next is यहाँ पे हम API write कर रहे हैं like save. So use here added post mapping annotation because हम database में data save कर रहे हैं. So use here like added post mapping slash save. Then next is public result response, create API method name, then curly braces. Then next step is use here request body. Then call here our author object, author model means create object like this. Then use here return, कहाँ पे रिटर्न करना है author service में, copy this one and paste here and create one more method and pass here. This is our author object here like this and then use semicolon. So you can see यहाँ पे हमें session मिल रहा है, create this method in service class. Click on this, create this one, call here our added auto wire private like author repository like this because हम सर्विस को रिपोजिटरी से कनेक्ट करते, so that's why I use your repository. So next step is use here try catch block. Okay, then create here metadata response, then use new keyword. Next is metadata response like this, use semicolon. Then next is result response because हम result response में return करने वाले, so use here result response. Then use new keyword, copy this result response and paste here, then use semicolon. So next step is create here author object like save, call here author repository dot save our object, copy this one and paste here and then use semicolon. And next step is metadata response dot set code like 200. Next is metadata response dot set message like success.
like this. Then next is metadata response dot set number of records like 1. Next is metadata response dot set response dot set metadata response. Then next is response dot set result author save. Okay, and then return this response. Copy this code, paste in catch block, change as a 400, change as a fail, and then number of records is 0, and then result is null, like this. Save this code. Okay, so go to in book controller, call here like @AutoWire private book repository, book service, like this. Go to in author controller, copy this one and paste here same as it is. यहाँ पे हम save API करने वाले for book. So book service, copy this one and paste here. Create this method in book service. So call here AutoWire private book repository, like this. Create object book repository, use semicolon. Go to in author controller, go to in service, copy this one and go to book controller, go to in service and paste here like this. Only create like book model, pass here book model, pass here like book model, create here book object, import this one, copy this and pass here same as it is service, and save here book, create object like book, and pass this object in result like this. Call here book repository, save this. So next step है हम यहाँ पे write करने like get API. Okay, so use here @get mapping. Copy this code and paste here. So create method like find all. Copy this one and paste here. Okay, so create this method in service class. So copy this one and paste here. So return here like author repository dot find all. This is our JPA query. तो हम रिजल्ट में फाइंड ऑल कर देने वाले, मीन्स ऑल डेटा रिटर्न करने वाले रिजल्ट रिस्पॉन्स. So copy this one, pass here in number of records dot size like this. Okay, so go to in book controller. So copy this one and paste here. So copy this book service and paste here like this. Create this method in book service. Go to in author service. Copy this code. Go to in book service and paste here like this. Okay, so यहाँ पे हम कॉल करेंगे like book repository. Copy this one and paste here like this. Okay, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं मेन डेटाबेस में डेटा कैसे सेव करते हैं और कैसे गेट करते हैं. ओके, so go to in main class. So execute this code. Run as Spring Boot application. So you can see our execute successfully.
तो यू कैन सी, और यहाँ पे हमारे टेबल क्रिएट लाइक ऑथर एंड बुक ऑल्सो. गो टू इन माई एसक्यूएल इफ यू वांट टू चेक. सो रिफ्रेश दिस वन. तो आप यहाँ पे देख सकते बुक like this one and then next is author like this one. Okay, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन में. हम एपीआई को हिट करके देखते. तो गो टू इन author controller and one more thing, go to in book controller. So use here many to one and author controller use here one to many. Okay, this is our mapping relationship. Copy this author and paste here. This is our save API and pass here like name. So execute this API, same this one. So you can see here message is success, number of records is 1 and status code is 200. Data save is save. Data saved successfully. Data saved successfully in database. If you want to check in MySQL, so you can check also. So go to in author. So execute this one. So you can see here our data saved successfully. Go to in book like this one. Okay. So next step is go to in book controller. So copy this one book and paste here. So pass here like create some. Go to in book model, book name, pass here book 2 and then write here our object like author. Copy this one, then use curly braces like this, then column, then use here id. So go to in author table. So execute this one. So you can see here यहाँ पे हमारे पास 2 records है like 4 and 5. So हम यहाँ पे पास कर रहे हैं like 4 id like this. Okay, and execute this one. Then message is a success, number of record 1 and then code is 200. So go to in book table and execute this one. So you can see here id 3 generated and जो हमने पास किया like 4 as a author id in postman. तो डेटा सेव हो गया इन डेटाबेस. तो इस तरह से हम रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं यूजिंग मैपिंग रिलेशनशिप लाइक 1 to 1, 1 to many. ओके, तो इस तरह से हम अपडेट की एपीआई और डिलीट की एपीआई भी राइट कर सकते हैं. जिस तरह से हमने प्रोफाइल और यूजर में राइट किया सेम एज इट इज हम ऑथर और बुक में भी राइट कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनी टू मेनी, मेनी टू वन मैपिंग रिलेशनशिप यूजिंग स्प्रिंग बूट. इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मिलते अगले वीडियो में, तब तक कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.